Good morning, class. Today we shall take subject economics, and in this we'll take the first chapter, the story of village Palampur. Students, as you know, this subject is very much new for you because prior to this you have read only history, geography, and civics. So here one additional subject, that is economics. The introduction of economics, if I say about you, about the subject to you, that in this subject particularly we'll discuss about the finance and how the money is having important in life and how money makes money, and business activity, commercial activities. Prior to this also we read in junior classes, but basically there are some terms which are important and there is a need to understand in the worldly life, and when we proceed our in business activity, and how the money is important for any kind of business or activity. The importance of money we will understand in this subject even. So basically this subject tells you different kind of activities, and some of you have some of them you have knowledge about, like the economic activities, if you have heard, that is primary activities, secondary activities, and tertiary activities. So these are three activities, and on that particular any country's economic nature depends. Like when we say about India, like in India, we know that our country is the country of agriculture or primary activity. Most of like 65% population resides in villages. So basic activity is that agriculture activities. So here in the chapter, the first chapter is given to you related to that activities, that is primary activities, agriculture activities, and we know that every person is connected to the village, and we have a beautiful imagination of village. The people who live in village, they enjoy the life because the life is free of pollution, free of any tension, anxiety, etc, etc. But some problems are faced in village. What kind of they problem, the problems are, and how the life is of villages. So we'll discuss in this chapter, and simultaneously we'll try to understand some economic factors. Factor of production, factor of earning money, how the people survive in the village, and what is the importance of all these things in a person's life. So let's begin, because when we proceed to the chapter, step by step we will understand what kind of life people live in village, and what is the nature of villages in our country when we live in any part of the country, like east, west, north, and south. So let's begin. Overview, when we see that this is one of the picture about the villages, like the story is introduced to some the concept relating to the production, and this we do through the story of the hypothetical village. Hypothetical village is here imaginary village, means this is not the particular name, or it might be the name of, it can be the name of any village, but here generally we'll try to understand that this is the nature of our villages. So it is an hypothetical village called Palampur. ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब एक इमेजिनेटिव इमेजिनेशन विलेज है जिसका कि हम यहाँ स्टोरी डिस्कस करेंगे. So farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. Generally, you have seen in the villages, like people are having their own land, they cultivate, simultaneously they do the work of domestication, they rear the animal and sell the milk. Otherwise, other side, when we see that other people who are not having the land, they have some their own kind of business, whether they open the shop and other kind of work they do. These production activities need various type of resources like natural resources, man-made items, human effort, money, etc. होता ही है, कोई भी काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, नेचुरल रिसोर्स चाहिए. मीन्स इफ वी वांट टू ओपन एनी
बिजनेस और डू एग्रीकल्चर वी मस्ट हैव लैंड। फिर उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, मनी है, लेबर है, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें चाहिए। एज वी read through the story Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. So let's begin with introduction. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड। अब पालमपुर का जो स्टोरी है वो आप देखिए, ये थोड़ा सा आपको इसे समझ आएगा। सपोज ये आपका पालमपुर विलेज है और ये कैसे कनेक्ट है विद द अदर पार्ट्स ऑफ द एरिया। सो विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन, इसके आसपास भी छोटे मोटे कोई विलेज हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका पालमपुर विलेज है। देन एन ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड का मतलब है ये जितने भी यहाँ पर कोई एरिया है, विलेजेस हैं, ये सब कनेक्टेड है इससे ऑल वेदर रोड। वेदर रोड का मतलब है बरसात में कभी भी रोड ख़राब नहीं होती, हर मौसम में रोड अच्छी रहती है। ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स विद द विलेज टू रानीगंज। सपोज करिए कोई रानीगंज एरिया है, ठीक है। रानीगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। रानीगंज के साथ ही फिर क्या है, शाहपुर है। शाहपुर क्या है, ये स्मॉल टाउन है, ठीक है। रानीगंज नहीं, सॉरी, रायगंज है। एंड टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर मेनी काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल टू दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लक कार्ट्स, टोंगास, bogies, wooden cart drawn by the buffaloes loaded with jaggery and other commodities, to motors vehicle like motorcycles, jeep, tractor and trucks. Means on these road, all weather road, such kind of vehicle are move, ठीक है। वो सब उन चीज़ों के लिए है, जैसे जैसे गांव में व्हीकल होते हैं, ठीक है। आजकल तो क्या है, एवरी विलेज इज़ ऑन द path of modernity, every kind of vehicle we can see in the village, but when we talk earlier तो सीधा सा आपको टोंगा, घोड़ा गाड़ी, ये सब आप चीज़ को वहाँ दिखाई देते थे, या ब्लैक कार्ड मतलब भैंसा गाड़ी, जिसको भैंसा खींचता है, ठीक है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। अब आते हैं कनेक्शन के बाद कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितना बड़ा ये विलेज है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट 450 विलेज फैमिलीज आर लिविंग हेयर एंड दे आर डिफरेंटली with their caste, like 80 upper caste, 80 जो है वो upper caste का मतलब ब्राह्मण्स या ऊंची जात वाले लोग हैं। On the majority of land village, their houses, some of them quite large and made of brick with the cement plastering. The SCS is comprised of third population and live in the corner of the village and in the much smaller houses than which made of mud and straw. Most of the houses have electric connection and electricity powers all the tube wells in the field and is used in the various types of small business. पालमपुर has 2 primary school। देखिए पालमपुर का फैमिली डिस्कस हो गया, ठीक है। पालमपुर में कितने लोग रहते हैं, कितनी जातियां हैं, कैसे गांव बसा हुआ है, तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, ऑल काइंड ऑफ पीपल आर देयर। देन आफ्टर एवरी हाउस इज हैविंग इलेक्ट्रिसिटी, घर में भी इलेक्ट्रिसिटी है और खेतों में भी है, जिससे क्या होता है वो ट्यूबवेल से अपना इरिगेशन करते हैं लोग, और स्मॉल बिजनेसेस भी करते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, 1 हाई स्कूल, अनदर इज़ प्राइमरी स्कूल। हेल्थ केयर सेंटर भी वहाँ पर है, यानी कि छोटा मोटा हॉस्पिटल भी है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर कि गरीब लोगों का इलाज भी किया जाता है। जिनके पास पैसा है दे गो टू द town or city. So the description above shows that the Palampur is very well developed system of road, transport, electricity. मतलब कि इमेजिनेशन ऐसा है कि ऐसा गांव है जहाँ पर लोगों के पास सब सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। लोग अच्छे से अपना लैंड इरीगेट करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल भी है। सो कंपेयर दीज फैसिलिटीज दोज इन योर विलेज। तो अगर हम कहें इस पर आप एक छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं कि आपका विलेज किस तरीके की फैसिलिटी का है। आर देयर ऑल फैसिलिटीज़ लाइक पालमपुर विलेज, ठीक है। मतलब आपके गांव में भी ये सब फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर हैं, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे व्हाट द फैक्टर्स, व्हाट द यू कैन से रीज़न आर कमिंग देयर, हाउ द विलेज कैन बी डेवलप। सो अभी इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फैक्टर्स और ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेट फॉर द अनदर वीडियो, ओके, बाय।